Yes, so today is 25th December, Christmas. अभी पता नहीं हमें, वैसे तो हम लोग क्रिश्चियन नहीं है, हाँ। बट करते हैं सब, आई डोंट नो क्यों क्रिसमस का। यस, हम लोग भी ट्री, कहीं के घर पे ट्री भी हो, क्रिसमस ट्री भी देखा है, और सब क्रिसमस के प्रोग्राम्स और सब होता है। तो ऑफ कोर्स इट्स आल्सो अ गवर्नमेंट हॉलीडे, स्कूल में छुट्टी होती है, प्राइवेट में तो नहीं होती है छुट्टी, लेकिन स्कूल्स हाँ। में और गवर्नमेंट ऑफिसेज और सब में तो छुट्टी होती है। सो एनीवे, चलो लेट्स डू लिटिल बिट ऑफ रिकैप। 5 दिन हुए हैं ना हमारे क्लास के, 4 दिन हुए हैं। सो व्हाट हैव वी डन लास्ट टू क्लासेस? लास्ट वीक आई फोकस्ड ऑन एडजेक्टिव्स एंड ऑल्सो हाउ टू कंपेयर। सो हम्म। मैंने आपको 3 डिग्री सिखाई थी, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, राइट? हम्म। और यस। होमवर्क भी आप सबने किया है। हम्म। एडजेक्टिव्स मैंने दिया था होमवर्क के लिए, और इवन हमने हॉबीज के बारे में बात की थी, राइट? हाँ। सो अभी आज हम कर रहे हैं, इट्स अनदर पार्ट ऑफ ग्रामर। सो हम्म। what is this part of grammar now? This is today what we are doing. We are going to do adverbs. ओके। पता नहीं आज कहाँ सब जो रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स है कहाँ गए हैं। शोभना नहीं है, राहुल नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलवेज देयर इन एवरी क्लास। तो पता नहीं, तो आई होप they will see the recording. So today I need to explain very much properly, right? यस। What are adverbs? हम्म। अभी कौन बता सकता है? रिजवाना, मुदस्सिर, ओमदेव, कैन यू टेल मी व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या है? नो आइडिया। हाँ, उसको हिंदी हम्म। में क्या कहते हैं? नहीं मैम, आइडिया नहीं है एडवर्ब क्या होता है। ओके। वर वर्ब तो अपने जो सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते वो होता है। हम्म। सो एडजेक्टिव जो होता है, जो वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, राइट? हाँ। नाउन मीन्स संज्ञा, संज्ञा, हम्म। संज्ञा, राइट? संज्ञा, हम्म। संज्ञा या संज्ञा। हाँ। संज्ञा। हम्म। ओके। अब हाँ। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि नाउन क्या है उसके लिए आप क्लियर हो, और वर्ब क्या है उसके लिए क्लियर हो। तो हम्म। वर्ब मीन्स एक्शन, एक्शन हम्म। मीन्स विशेषण। और वो भी हम्म। मैंने आपको बताया है कि कोई भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं हो सकता है विदाउट अ वर्ब, विदाउट एन एक्शन। हम्म। ओके। तो जो चीज वर्ब को डिस्क्राइब करती है, हमारे एक्शन को जो डिस्क्राइब करता है, उसको एडवर्ब बोलते ओके। हैं। गॉट इट? सो इंग्लिश के स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होता है, वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? दे गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ओके। तो एज एन इंग्लिश टीचर आई नीड टू टीच यू ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले मैं नाउन सिखाती हूँ, वे मैं आपको वर्ब सिखाती हूँ, फिर मैं एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स पे आती हूँ। तभी मैं हमेशा स्टूडेंट्स को वही बोलती हूँ कि आप कंफ्यूज, जब कंफ्यूज हो रहे हो तब आपको क्या सोचना है कि ये चीज किसको डिस्क्राइब कर रहा है। हम्म। ओके। तो जो एडजेक्टिव है वो हमेशा हमारे नाउन को डिस्क्राइब करेगा, और जो एडवर्ब है जो वो हमारे वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। मीन्स इट्स ऑलवेज गोइंग टू डिस्क्राइब द एक्शन। हम्म। ओके। तो मेरे लिए ये डिफरेंशिएशन बहुत ही क्लियर है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को यस डेफिनेटली मैंने देखा है दैट दे गेट कंफ्यूज्ड। ओके। सो पहले हम लोग वी लेट्स बी क्लियर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब. So I will read it and I will type it also on the chat. So adverbs are words that tell us something more about verbs in a sentence. Okay, so हम्म। I'm putting this on the chat also. Yes, Vikashi, good morning. વેરી ગુડ મોર્નિંગ. I think આજે ક્રિસમસ ના લીધે શું અટેન્ડન્સ ઓછી છે એવું છે? યસ, એવું લાગે છે ખરા. બધાને એમ કે આજે રજા હશે. એટલે હું મારા એમાં વધારે ક્લેરિટી રાખું છું કે એટલીસ્ટ એ લોકો રેકોર્ડિંગ તો જોશે. ટેલ અસ મોર. બરાબર ને? હમ. Okay, and here again, class, I am repeating that verbs are action words. So you need to describe. Now I'm going to give you some
एग्जाम्पल्स ना एडजेक्टिव्स 3-4 टाइप के होते हैं. So the first type that type and adverbs also are of different types. So the first type of adverb, पहले टाइप का जो है that is going to be your adverb of manner. Okay? तो adverb of manner से आप क्या समझते हो? What is adverb of manner? Manner means क्या? Means yeah. Means ये चीज कैसे हो रही है? How is it being done? हाँ, Okay? Should I give you an example? Brizwana, Bharti, Omdev, and Mudassir. 4 of you are present in the class today. Do you want me to give you an example? Adverb of manner. Manner means what should I give you? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सिर्फ मुदस्सिर अटेंटिव है क्लास में और 3 जन नहीं है. एक एडवर्ब का सेंटेंस बना के देने का है. हाँ नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल अभी दे रही हूँ. हाँ. ओके, द हाँ. एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू इज ऑन ये चैट पे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. हाँ. ही सिंग्स वेल. ओके, हाँ. तो हाँ. सिंग्स हमारा एक्शन है, हमारा वर्ब है सेंटेंस में. नाउ हाँ. हाउ डज ही सिंग, वो कैसे गाता है? सो ही सिंग्स वेल. वेल. बराबर है. हाँ. तो मैनर है वो कि कैसे उसने ये चीज की है. तो हम्म. हमारा आंसर है अच्छे से किया, एक्शन उसने अच्छे से किया है. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल इट एडवर्ब ऑफ मैन. ओके, या अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन मैं सब अलग अलग एडवर्ब्स के आपको एग्जांपल दे दूं. Yes. So first we have adverb of manner. Second adverb is adverb of time. ओके, तो उसमें हमें पता चलेगा कि एक्शन कब हुआ. ओके, हाँ. तो मैंने एग्जांपल आपको दिया है दैट डॉक्टर विल सी यू टुमारो. So see is your action, it's your verb. Now, when is the doctor going to see you? The doctor is going to see you tomorrow. So that is your adverb of time. When something is going to happen. Manner is how something has happened. Time is when something has happened. कब हुआ है ये चीज. Okay. Next, we are going to go to adverb of place. So adverb of place is going to tell you where. Where means kahan. So I'm using a very simple sentence. Come here. Okay, ये भी sentence है. It's only 2 words, but it's a sentence. Why? Because इसमें एक action है. Come. So come is your action. So kahan? Come here. इधर. Okay. So वो तुम्हारा adverb of place है. और जो 4th type का adverb है जो हम कर रहे हैं, that is actually there are 2 more. Let me do all 5 with you. It's better. So that is going to be, this adverb is adverb of frequency. Okay? Frequency का मतलब समझते हो आप लोग? Frequency means एक के बाद एक. एक के बाद एक, या कितना जल्दी या कितना लेट. Okay? That is frequency. So we can say that I can use this as an example. Do you understand the word often? Often आप समझते हो ना? Okay, my example is I go to watch a movie often. Often means एकदम रोज नहीं, but बहुत बार. Often means बहुत बार. Okay, so हम मेरा adverb क्यों है often? Okay, मेरे verb कौन से है sentence में? I go to watch a movie often. What are my verbs? Action word कौन सा है ये sentence में? Watch. Watch भी verb है और go to भी verb है. हाँ. Okay? Go. हाँ. अब movie मेरा noun है.
और हाँ मेरा एडवर्ब है ऑफन। क्यों एडवर्ब क्यों है और एडजेक्टिव क्यों नहीं है? बिकॉज ये मेरे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। हम हमारे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑफन मीन्स बहुत बार। तो फ्रीक्वेंसी उसमें इसलिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है बिकॉज इट्स टेलिंग मी कि बहुत बार मैं मूवी देखने के लिए जाती हूँ। ओके, and ओके then the last one that I'm going to do, that's going to be adverb of degree. अब डिग्री क्या चीज होती है? सैंपल okay, this is your example. We will study a totally new subject. Okay, so here your verb is will study and सब्जेक्ट तो नाउन है तुम्हारा सेंटेंस में। तो एड देखो, ये सेंटेंस मैंने जानबूझ के ये सेंटेंस का एग्जांपल दिया, वी विल स्टडी अ टोटली न्यू सब्जेक्ट, बिकॉज इसमें है एक एडवर्ब है और इसमें एक एडजेक्टिव भी है। ओके, वर्ब भी है और नाउन भी है। तो अभी न्यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम्हारा नाउन है और न्यू तुम्हारा एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब क्यों टोटली इज योर एडवर्ब? तो टोटली क्या डिस्क्राइब कर रहा है? तुम क्या पढ़ने वाले हो? हाँ ओके, सो दैट इज व्हाई इट्स एडवर्ब ऑफ डिग्री, टोटली न्यू है। ओके, सो एडवर्ब दो काम करता है। एडवर्ब काम एक करता है कि हमारे वर्ब को डिस्क्राइब करता है, हमारे एक्शन को डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब एक दूसरा सेकेंड काम भी करता है, वो एडजेक्टिव को भी ज्यादा डिस्क्राइब करता है। I don't know if this is too complicated for basic English या आपको समझ में आ रहा है, but I have to tell you. So I am telling you this. तो मैम That इसमें adverb डिग्री एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन सा हुआ ये? totally तुम्हारा adverb है और it's adverb of degree. देखो, ओके ये place के बारे में नहीं बता रहा है, ये हाँ manner के बारे में नहीं बता रहा है, time के बारे में भी नहीं बता रहा है, frequency भी नहीं बता रहा है। हाँ ओके, अब मैं एक और पॉइंट यही दे रही हूँ कि एडवर्ब आल्सो डिस्क्राइब्स द एडजेक्टिव। ओके, तो अभी इसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दैट शी इज वेरी ब्यूटिफुल। अभी दिस इज द ओनली सेंटेंस आई एम एबल टू थिंक ऑफ राइट नाउ। तो ब्यूटिफुल है जो एक एडजेक्टिव है, वो डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटी के बारे में, बट वेरी ब्यूटिफुल तो वेरी तुम्हारा एडवर्ब है। ओके, अभी फ्रॉम टाइम टू टाइम थोड़े जो 3 स्टूडेंट्स भी क्लास में है, वो भी आप थोड़े थोड़े इनपुट्स मुझे दो, बिकॉज मुझे ऐसा लगेगा कि सिर्फ मुदस्सिर जाग रहा है, रिस्पॉन्स वही दे रहा है मुझे, बाकी के 3 जन आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। सो यही है मैडम। यस ओमदेव, बस यही है, जाग ही रहे हैं मैडम। जाग रहे हो ना? बस तो ऐसे हाँ बताते रहो मुझे, हाँ प्लीज, थोड़ी थोड़ी देर। वरना अच्छा, मुदस्सिर के लिए तो बेनिफिट है, बिकॉज उसके लिए तो 1-on-1 पर्सनल क्लास हो जाएगा, तो फायदा उसको है, राइट? चलो, let us do some sentences और फिर बाकी I'll give you some homework to do also. First of all, in this exercise you're going to tell me which will be the correct adverb to use. मैं आपको 2 adverb का ऑप्शन दूंगी और आप मुझे बताओ कि सेंटेंस के लिए, करेक्ट सेंटेंस के लिए हमें कौन सा adverb यूज करना चाहिए। Okay, so first the exercise is to choose the correct adverb. This is what we are going to do. अब आप देखो, मेरा पहला एग्जाम्पल है ट्राई टू कम होम डैश। ओके, अभी मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, अर्ली एंड लेट। तो क्या यूज अर्ली। होना चाहिए? अर्ली। अर्ली, ओके।
जनरली कोई ऐसा नहीं बोलता है ना, ट्राई टू कम होम लेट. पीपल आर जनरली सेइंग, उनके फैमिली मेंबर्स को ऐसे ही बोलेंगे ना, ट्राई टू कम होम अर्ली. लेट ऐसा कोई बोलेगा तो इट विल नॉट बी करेक्ट. Okay. Your second sentence is, we will go to watch a movie. I'm sorry, bit of typo hoga, error. It's movie and dash. Okay. And your options are, अब sentence सोच के बताओ हाँ मुझे आंसर. This is your, we will go to watch a movie. Yesterday है और tomorrow है option. टुमारो. tomorrow. Okay. क्यों tomorrow? विल बी है, विल बी यानी फ्यूचर के लिए यूज होता है. हाँ, बस मुझे वही जानना था कि योर थॉट अबाउट दिस एंड देन आंसर. बराबर है. हाँ. ये सोच के आंसर दिया. यू डिड नॉट जस्ट गेस इट, राइट? अगर इसकी जगह वी हैव गो टू होता तो यस्टरडे आ जाता. ओके. ओके. यस, राहुल हैज जॉइंड द क्लास. ओके. सो Anita has been to Dubai dash, and your options are recently and lately. सोच के बताओ. Rahul, we are doing adverbs. Yes, so for ma'am. this, you will have to see the recording maybe, thoda, what you missed. Yes, yes. Sorry, late joining, but थोड़ा सा issue था. नहीं, कोई बात नहीं. मुझे ऐसा लगा कि सबको ऐसा ना हो जाए that we have a holiday today. That's No. all. So Anita has been to Dubai dash. So recently. Recently. Okay. नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन मैडम. Omdev, why recently? क्यों recently? Lately, कि वो lately गई आता है. है. Sorry, कि what, वो गई Omdev? हो. बीन का मतलब मेरे को नहीं. Been is past tense. Has been. हैज बीन. हाँ. Lately, lately लेटली आएगा. नहीं, recently is correct. इसलिए मैंने पूछा कि क्यों, why he has gone for said recently. Lately means अभी हुआ. अभी हमने यूज किया है यहाँ पे has been, that which we have used past tense. Recently means थोड़े टाइम पहले. Okay. The meaning of recently is थोड़े टाइम पहले. So अच्छा, हाँ, रिसेंटली थोड़े टाइम पहले. हाँ. तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, देखो ये आज है हमारा 9वां क्लास, 9th क्लास of basic English. So I can say I have recently started taking basic English. Lately नहीं हुआ है, अभी 9 क्लास हो चुके हैं, तो मैं वर्ड recently यूज करूंगी. Okay, like that. Okay. Yes, now the next sentence is, dash the children bought new toys. Okay. Abhi, be careful about your adverb. Your options are yesterday and tomorrow. Yesterday. yesterday. Came yesterday. Bought કારણ કે છે past એટલે past tense tense છે છે ને, madam. past. લઈ લીધેલા છે already. Okay. ठीक है. So Bharti and Rizwana have also answered yesterday. So I'm happy that you have understood first of all what is past tense, and yes, you all have used the correct one. अभी ऑप्शंस के बगैर मैं दे रही हूँ, मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ. देखो, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स में जब भी हम पे छोड़ा है कि आपको जो ठीक लगे वो यूज करो, तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं और बहुत सारे करेक्ट ऑप्शंस भी हो सकते हैं. कहीं सेंटेंस में कुछ ही सेट होता है. ओके. तो अगले
फर्स्ट 4 एग्जांपल्स में आप लोगों को मैंने ऑप्शंस दिए और इसमें से आपको चूज करना था. अभी इसमें आई एम नॉट गिविंग यू ऑप्शंस, यू हैव टू चूज इट ऑन योर ओन. ओके, सो आई विल गिव यू दिस एग्जांपल. There can be more than one correct answer. 2-3 सही जवाब हो सकते हैं. Okay. The sentence is Vinay is dash present for the class. यहाँ पे हम क्या यूज कर सकेंगे? Is not. Today Bharti नहीं इसमें सेट होगा. As an adverb, we have to use an adverb. Not is not an adverb. It will become a verb. But still, I'm telling you, no, Rahul, not is not correct. Comes, not correct. You're using verbs. Come verb है. मुझे adverb चाहिए. Come एक verb है, caption है. And Vinay comes present to the class. How does that make sense? That's not at all correct. Daily. See, sentence है Vinay. हाँ, okay. Is dash. मैं फिर से type कर रही हूँ. Okay. हाँ. Vinay is dash present for the class. Okay. Not हाँ. present is a verb, so I don't want to use it. Comes, Vinay is comes present. Absolutely not. Okay. So यहाँ पे हम use कर सकेंगे always. Daily भी आएगा ना मैम? Yes, I'm coming to that. Wait, never भी use करेंगे. Vinay is never present for the class. Vinay is daily present for the class. फिर sometimes भी use कर हाँ, पाएंगे हम. sometime, हाँ. Vinay is sometimes present for the class. हाँ. जैसे हमारे क्लास में होता है, कई लोग कभी प्रेजेंट होते हैं, कभी नहीं होते, कई लोग ऑलवेज दे आर ऑलवेज प्रेजेंट. तो ये सब ठीक रहेंगे. ये सब एडवर्ब्स ठीक रहेंगे. तो पहले आप दिमाग में रखो कि एडवर्ब क्या है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आई एम गोइंग ऑन एंड ऑन सेइंग दिस टू यू कि एक्शन क्या है तुम्हारा, वो वर्ब है, और जो तुम्हारे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है वो तुम्हारा एडवर्ब. રાહુલ, તું છું તો તું મને કહી શકે છે કે એડવર્બ ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? મને નથી ખબર. You're muted. લગભગ મેડમ ક્રિયા વિશેષણ તમે જે બોલો ક્રિયા. છો એની ઉપર મને અંદાજ આવે છે કે કઈક ક્રિયા વિશેષ પ્રોસેસ થતી હોય એવું દર્શાવવું હોય ત્યારે. ઓકે, ઓકે, ચાહે ભૂતકાળમાં હોય, પ્રેઝન્ટમાં હોય કે ફ્યુચરમાં હોય, ગમે એ ટેન્સમાં હોઈ શકે. ओके. ઓકે. सो अभी सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस में दे रही हूँ. We dash visit our friends. Okay, dash. So अगेन बहुत सारे ऑप्शंस है. सोच के बताओ अब मुझे. पहले क्लियर हो जाओ कि तुम्हारा वर्ब यहाँ पे विजिट है. विजिट एक्शन है, वर्ब है तुम्हारा, और उसको हमें डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब यूज कर. ઓફન. साक्षात राहुल. Okay. Sometimes, correct. Often, sometimes. I've got 2 correct answers. I'm feeling Weekend. very happy. Yes, Mudassir. Weekend. What? Weekend. Weekend. But weekend यहाँ पे weekend visit our friends नहीं हो पाएगा ना. Okay. We visit our friend on weekend कर सकते हैं हम. अच्छा, on weekend. हाँ. हाँ, लेकिन રિસન્ટલી આएगा मैडम? नहीं तो recently visited आएगा. Okay. Right? But sometimes and often they are very perfect answers. So we sometimes visit our friends. We often, और एक और भी हम कर सकते हैं. We never visit our friends. Correct? कभी ऐसे भी हो सकता है ना कि you are very busy and you just don't have time. So we never visit. Okay. So this is going good. Now let me give you one more. 3 more we can do.
dash I reach office before 10 a.m. Dash I reach office before 10 a.m. Today I read. Daily. 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 Okay, Om Dev is saying daily. डेली क्या रिजवाना? डेली आ सकता है डेली आ सकता है. Yes. और क्या आ सकता है? Today. Today I reach office. Reached आएगा. Reached. Sometimes क्या आ सकता है? Sometimes. Sometimes आ सकता है. Daily आ सकता है. Always. Always I reach office. Okay. Okay. Regularly भी हम use कर सकते हैं. Okay. Regularly. Regularly I reach office before 10 a.m. So I think गुजरात में 10 o'clock पहले पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट है. Of course, metro cities में तो habit है ही सबको. They start work at 9 o'clock also. But Gujarat, it's difficult. I see many offices starting around 11. Right? But of course, in foreign countries, people are starting work by 8, 8:30 also. So it's different everywhere. Okay. Okay. This is your next sentence. अभी minister का भाषण सबने सुना होगा. तो the minister kept talking dash for an hour. Okay, 1 hour तक वो बोलता रहा. So यहाँ क्या use कर सकते हैं? Continuously. Sorry, what? I couldn't hear. Continuously is correct. Continuously, Continue. Om Dev is correct. Somebody else also spoke something. Continuously तो सही है उसका. और कुछ आप सोच सकते हो? Louder. Loudly use कर सकते हो. Loudly. Sorry. Loudly we can say. Yes. The minister kept talking loudly, correct? Continuously, then softly भी बोल सकते हैं. हाँ, of Softly, course. हाँ. Loudly use कर रहे हैं तो softly भी use कर सकते हैं. Politely भी use कर सकते हैं. हाँ, Rudely भी politely. बोल सकते हैं. बहुत सारा हो सकता है. Okay. But I think perfect जो आएगा इसमें it will be continuous. मैडम वो बोल सकते हैं हम वो इंथुजियास्टली और एग्जैक्ट क्या वर्ड होता है मुझे पता नहीं है पर वो बोलते हैं ना कि आनी स्पीच हमने हम जुस्सो चढ़ी जाए जोश चढ़ी जाए Angrily, प्रोत्साहित करे આપણને हाँ प्रोत्साहित हाँ, करे motivating. इंथुजियास्टली को क्या बोलते हैं मैडम Enthusiastically. हाँ हाँ enthusiastic. Enthusiastically. Okay, very good. Enthusiastically. Okay, good. So I'm using this in a example that when my students reply to me enthusiastically, okay, I feel very motivated. अभी मुझे बताओ कि मैंने और कौन सा एडवर्ब यूज किया. When my students reply to me enthusiastically, वो मेरा पहला एडवर्ब था. I feel very motivated. Very motivated. Rarely. Very motivated. Barely. Okay. Barely नहीं, very motivated. જ્યારે મારા સ્ટુડન્ટ્સ બહુ મને enthusiasm બતાવે છે, enthusiastically રિપ્લાય કરે છે, હું બહુ મોટિવેટેડ ફીલ કરું છું. બરાબર? હું કે કોઈ બી બીજા ટીચર હોય એ મોટિવેટેડ ફીલ કરે કે સ્ટુડન્ટ્સ રિસ્પોન્સ આપે છે. ઓકે? ઓકે, નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ.
Lata was dash busy, so she did not phone me. હવે આ કારણ શું છે એ વિચારીને જવાબ આપો કે અહીંયા શું આવે. વેરી આવે મેડમ. Still, વેરી સિવાય શું આવી શકે? વેરી તો Till. આવે. યસ રાહુલ. still, Still busy ના. no. થોડુંક. Lata was very busy, so she did not phone me. That's perfect. Okay. What else can we use? We can also use so. So busy. That was so Very busy, हाँ, very. Very Too and busy. so. So And you see, we could use very, we could use so, we could also use that. Lata was that busy, so she did not phone me. Okay. Okay. This book dash covers the history of Gujarat. This book dash covers the history of Gujarat. Covers means આખું બધું જ આમાં આવી જાય છે. Okay, that is what it means. So આપ એક પોઝિટિવ રીતે બી આ સેન્ટેન્સ આવી શકે અને નેગેટિવ રીતે બી સેન્ટેન્સ આવી શકે. ઓલમોસ્ટ આવે. Almost, ha. Almost covers the history of Gujarat. Then this book almost covers the history of Gujarat. Then what else? Come on. બહુ બધા આવી શકે અહીંયા ઓપ્શન્સ. ઓલમોસ્ટ એટલે આમ લગભગ કવર થઈ જ જાય છે. પછી બીજું શું આવી શકે આમાં? Everything. મોસ્ટલી. Everything is not correct. No, huh? મોસ્ટલી. Mostly. Yes. Mostly. Everything covers the history. No. Mostly. Hardly also will come. Hardly એટલે બહુ જ ઓછું. Whole मुदस्सिर इसमें आ सकता है wholly या fully. Adverb ऐसे आएगा. Okay. We can also use the adverbs completely, totally. Okay. Completely covers the history of Gujarat. Totally covers the history of Gujarat. Okay. We can use these words. Okay. There is okay. There is dash any water in the bottle. There is dash any water in the bottle. What is this trying to say that there is lot of water? Yeah, there is very less. હાર્ડલી. हाँ. તું તારી જાતે જવાબ આપે છે કે ગૂગલ કરીને જવાબ આપે છે? અરે ના મેડમ, ગૂગલ અહીંયા ક્યાં ઉપર બેઠો છું અગાસી ઉપર. હવે એ તો હવે મને ક્યાં ખબર તું ક્યાં બેઠો છે? એટલે પૂછવું પડે. તો કેમેરા ઓન કરો મેડમ. ફટાફટ તું મને જવાબ આપે છે એટલે મારે પૂછવું પડે ને કે ગૂગલ તો નથી કરતો ને તું. આપણે ગૂગલમાં મેડમ આવે જ નહીં ને આવું. બીકોઝ હું તમને લોકોને ના પાડું છું કે તમે જ્યારે આન્સર આપતા હો તો તમે ટ્રાય કરો કે તમે તમારી જાતે આપો, રાઈટ? કે ગૂગલ ના વાપરો. ના મેડમ, ગૂગલમાં તો ન આવે ને. તમે ડાયરેક્ટ સેન્ટેન્સ મૂકો એ ભેગું તો હું ન મૂકી શકું ને. ગૂગલમાં પણ ન આવે. આવી શકે. હા. Okay. Anyway, chalo. He's right. There's hardly any water in the bottle. That is the correct answer. Okay. अब hardly का meaning आप लोग समझते हो ना कि hardly means बहुत कम है. મેમ મને ગુજરાતીમાં આવડે છે, અંગ્રેજીમાં એ શબ્દનું નથી આવડતું એટલે કે બોટલમાં મારે એમ કેવું કે જરાય પાણી નહોતું. હા હા, બહુ જ ઓછું, બહુ જ ઓછું. હા, જરાય પાણી નહોતું એમ. જરા એટલે બિલકુલ નતું, પણ એટલે આનો મીનિંગ એ થયો કે બહુ જ ઓછું એમ. હા, એટલે તો શું કહેવાય એને ઇંગ્લિશમાં? Hardly. ઓકે, હાર્ડલી. ઓકે, ફાઇન.
there's hardly I can say there's hardly any time left. ऐसा. Okay. Or I can say there's barely any time left. એટલે હવે બહુ જ લિટલ ઓછો બીટ time. કહેવાય કે લિટલ બીટ નો કહેવાય? Little bit, but yeah, see, there is little bit any water in the bottle. ના ના. બરાબર. So if I had not used any, so there is little water in the bottle. હા. એ બરાબર થઈ જાય. હા. Okay. હવે હું તમને adverb સાથે sentence આપું છું. મને એ adverb નું મને opposite આપો. Okay, આ થોડી અલગ exercise થશે. Opposite you all understand. Okay, she treated her children cruelly. હવે એકવાર repeat કરું છું. Treated is your verb, children is your noun, and cruelly is your adverb. Why cruelly is not adjective? Because it is describing the verb treated. એનો description છે કે how did she treat her children? She treated her children cruelly. She treated her children softly. Softly is not exactly correct. Kindly. Kindly. Politely, okay, Bharti is saying politely, but the perfect opposite of cruel is kind. Okay, Kindly. so it's going to be kindly. Now તને આટલી બધી ઉધરસ આવે છે તો તું chat ઉપર જવાબ આપતો હોય તો તું chat ઉપર જવાબ આપ એટલે તને બોલવું ના પડે એટલે. He's very enthusiastic, right? So he has to answer. Okay, next sentence. The words have been spelled correctly. So what's your adverb? First tell me what's your adverb and then we'll find the opposite of that adverb. Incorrectly. And what's the other word? Spelled. Spelled to verb છે તમારો. Okay. Action છે. Correctly is your adverb. Adverb. Bharti has said incorrectly. It is Okay. correct. Correctly, incorrectly. એ બે opposite છે. She is બરાબર છે. right. અને બીજું શું આવી શકે અહીંયા? Correctly no, બીજું એક opposite શું આવી શકે? Incorrectly. Wrongly. Wrong. Wrong Wrongly. પણ આવી શકે. Bharti, wrongly wrong નહીં. Wrongly. Okay. Wrongly આવે. Okay. So answer is both. Both answers are correct. Incorrectly and wrongly. Both are correct. I'm just putting it on the chat, okay? Adverb, ઘણા બધા adverbs માં rightly, happily, sadly, ly add થતું હોય છે. પણ મારે તમને લોકોને એ કેમ નતું કેવું કેમ કે એ મગજમાં નહીં લઈ લેવાનું કે આવું જ હોય તો adverb હોય. કેમ કે બધામાં ન થાય ને મેડમ એટલે અમુકમાં ન બી થાય. Majority, yes, adverbs માં આવી રીતે ly ending આવે છે. પણ એ 100% correct rule નથી લાગુ નથી. પડતું. એમ. એટલે એ તમે જોઈ શકો છો, એ તમે એક ટ્રિક તરીકે યુઝ કરી શકો છો, but it is not 100% applicable. Okay? So that is why I did not want to tell you this, but I am telling you this. Okay? We must eat food quickly. We must eat food quickly. Quickly adverb છે મેડમ. Quickly adverb છે અને એનો opposite શું છે? Quickly का opposite क्या है? Slowly. और कुछ है? Slowly दोनों ने दिया है. मनीषा और मुदस्सिर दोनों बोल रहे हैं slowly. सही है उनका आंसर. Lately नहीं. No. We must eat our food slowly ही आएगा. Perfectly. Quickly का opposite slowly ही रहेगा. Okay? Let's see. I have time for maybe we have time for at least one more. That's going to be
Sonali is always late. Always late. લેટ એડવર્બ છે એનું આવે No, your adverb is always. ઓલ સમટાઈમ્સ Always would be, it's sometimes, and it can also be never. Okay? Never. ઓકે Regularly means only always. Manisha. ડેઈલી આવે મેડમ, ડેઈલી. નહીં, not daily. Always નો મતલબ એનો opposite જોઈએ છે આપણને, એટલે never આવે. બરાબર? એક હું last કરાવી દઉં. But this you know, this નેવર is કેવી રીતે મેમ? હેલો, હા? Yeah? નેવર કેવી રીતે? લેટ નું નેવર Always એટલે કાયમ. कायम, हमेशा, ऑलवेज. उसका मुझे ऑपोजिट चाहिए तो नेवर ही आएगा ना. रेगुलरली मीनिंग दिया है तूने मुझे, ऑलवेज का मीनिंग दिया है. मैं बोल रही हूँ मुझे ऑपोजिट चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड? યસ. हाँ. Manish talks to everyone rudely. રૂડલી એડવર્બ છે અને એનું ઓપોઝિટ પોલાઇટલી. हाँ तो बहुत इजी है, मैंने खबर से. मुझे पता था कि सबको ये आंसर मुझ सबको आने वाला है, बट फिर भी मैंने पूछ लिया. So yes, naturally your homework is going to be about adverbs only. Correct? So अभी होमवर्क कल चाहिए मुझे, because परसों क्लास है हमारा, राइट? सो मंडे के का जो क्लास है उसमें होमवर्क आपको जल्दी देना, सबमिट हाँ. करना पड़ेगा, बिकॉज वेडनेसडे क्लास है. सो वी हैव अ क्लास डे आफ्टर टुमारो, उसमें हम थोड़ा एडवर्ब्स के बारे में और भी कंटिन्यू करेंगे. बट आफ्टर टुडेज क्लास मुझे ऐसा लग रहा है कि एडवर्ब्स का कंसेप्ट समझ में तो आया है आपको. आई थिंक सो, राइट? सो क्लास, थैंक यू. आई विल सी यू डे Ma'am, आफ्टर टुमारो. यस મારો એક જ ક્વેશ્ચન હતો કે સર. આપણે આ સોમવારે ક્લાસ હોય બરાબર, પછી તરત બુધવારે આવે તો વચ્ચે એક જ દિવસનો ગાળો, એટલે ઈ કઈ રીતનું બોલવું? પણ હું તમને લોકોને ના, સોમવારે મારે જે પૂછાય તો નહીં, પણ મને આમ અંદરથી એવું થયું કે મારે આ ક્વેશ્ચન તમને પૂછવો જોઈએ. એટલા માટે, નહીં. કેમ કે ધારો કે હું 3-4 ક્લાસમાં અલગ અલગ હોય તો બધી જગ્યાએ હોમવર્ક તો આવતું જ હોય. હું એવું નથી કહેતો કે તમારું હોમવર્ક બહુ વધારે હોય છે, પણ ના, ઘણી ના. વસ્તુ એવી હોય કે આપણાથી ઈઝીલી ડન ન થતી હોય, ટાઈમિંગ લઈ લેતી હોય છે. એકચ્યુઅલી એટલે જે છે ને ટાઈમિંગની અલગ અલગ 3-4 કોર્સ હોય તો બધાયનું હોમવર્ક કરવામાં ટાઈમ ક્યાં વયો જાય ને ઈ ખબર નથી રહેતી, પછી એવું થાય છે. સોમવાર માટે હું ઓલવેઝ એવું ટ્રાય કરું છું કે બહુ ના. શોર્ટ અને સિમ્પલ હોમવર્ક આપું છું. ના ના, એટલે ઈ તો સવાલ નથી, ઈ તો તમે આપી શકો, એમાં કઈ અમે કઈ પણ ન શકીએ ને અમારે કરવું પડે અમારી માટે, બરાબર છે. પણ આ તો વાત છે એમ કે એક જ દિવસનો જે ગેપ રહે ને, ઓલું બુધવાર થી પછી રવિવાર 4 દિવસનો ગેપ રહે છે, એમ હું કહેવા ઈ પણ માંગુ છું. એ એટલે વખતે હું કાયમ તમને 2 હોમવર્ક આપું છું, હા રાઈટ? હા હા પણ મંડે ને વેડનસડે નો ગેપ હોય છે, એમાં હું હા. ઓલવેઝ ટ્રાય કરું છું કે એક જ હા, વસ્તુ ના. અને શોર્ટ આપી દઉં છું. ના ના, ઓકે. So I keep this in mind. Okay? Yes? Okay, thank you, class. I will see you day after tomorrow. Yes? Okay, goodbye. Bye, everyone. Bye. Bye. Bye.